श्री लक्ष्मी कवचम् श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री लक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। लक्ष्मी में चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः। नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्री स्वरूपिणी। रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु शमेश्वरी। विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा। जयदात्री धनदात्री पाशाक्ष्यमालिनी शुभा। हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी। कृष्णपरायणा देवी श्री कृष्ण मनमोहिनी। जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी। सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी। भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु। कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्ति संयुतः। त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसंकटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं। भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु। धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनम। मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्र वन्द्या च गर्भिणी भवेत्। धारयेद्यपि कंठे च अथवा वामबाहुके। यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत्। मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किंचिन महीतले। पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेद्यदि। सर्वपाप विमुक्तस्तु लभते परमां गतिं। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने। राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः। पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि। सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घयुष्कं यशस्विनं। शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः। सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि। रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः। लिखित्वा भोज्यपत्रे च अथवा ताडपत्रके। स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि। यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवताः। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी। आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी। धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री लक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। लक्ष्मी में चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः। नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्री स्वरूपिणी। रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु शमेश्वरी। विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा। जयदात्री धनदात्री
पाशाक्ष्यमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्र वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कंठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किंचिन महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेद्यदि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घयुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः लिखित्वा भोज्यपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवं श्रीगणेशाय नमः। ओम अस्य श्री लक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु शमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्ष्यमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं
भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणाद्गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्र वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कंठे च अथवा वामबाहुके। यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किंचिन महीतले। पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेद्यदि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घयुष्कं यशस्विनं। शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः। लिखित्वा भोज्यपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवताः। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री लक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु शमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्ष्यमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसंकटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणाद्गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्र वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कंठे च अथवा वामबाहुके। यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत्
मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किंचिन महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेद्यदि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घयुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः लिखित्वा भोज्यपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री लक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु शमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्षमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसंकटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्र वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कंठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किंचिन महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेद्यदि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घयुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या
द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः लिखित्वा भोज्यपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। श्रीगणेशाय नमः। ओम अस्य श्रीलक्ष्मीकवचस्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु शमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्ष्यमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्र वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कंठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किंचिन महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेद्यदि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घयुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः लिखित्वा भोज्यपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी
आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री लक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु शमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्ष्यमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्र वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कंठे च अथवा वामबाहुके। यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किंचिन महीतले। पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेद्यदि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घयुष्कं यशस्विनं। शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः। लिखित्वा भोज्यपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवताः। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री लक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु शमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया
कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्ष्यमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात् एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्रविवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः गर्भिणी लभते पुत्र वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कंठे च अथवा वामबाहुके यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किंचिन महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेद्यदि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घयुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः लिखित्वा भोर्जपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम् श्रीगणेशाय नमः। ओम अस्य श्री लक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु शमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्ष्यमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेत् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसङ्कटात्
एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्र वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कंठे च अथवा वामबाहुके। यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत् मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किंचिन महीतले। पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेद्यदि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घयुष्कं यशस्विनं। शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रपक्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः। लिखित्वा भोज्यपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवताः। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री लक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु शमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्ष्यमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्ति संयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसंकटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणात् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्र वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कंठे च अथवा वामबाहुके।
यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत्। मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किंचिन महीतले। पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेद्यदि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घयुष्कं यशस्विनं। शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते। मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः। लिखित्वा भोज्यपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित्। शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवताः। बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्। श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री लक्ष्मी कवच स्तोत्रस्य श्री ईश्वरो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री लक्ष्मी प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। लक्ष्मी मे चाग्रतः पातु कमला पातु पृष्ठतः नारायणी शीर्षदेशे सर्वांगे श्रीस्वरूपिणी रामपत्नी तु प्रत्यंगे सदावतु शमेश्वरी विशालाक्षी योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री पाशाक्ष्यमालिनी शुभा हरिप्रिया हरिरामा जयंकरी महोदरी कृष्णपरायणा देवी श्रीकृष्ण मनमोहिनी जयंकरी महारौद्री सिद्धिदात्री शुभंकरी सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासिनी भयं हरतु भक्तानां भवबन्धं विमुच्यतु कवचं तन्महापुण्यं यः पठेद् भक्तिसंयुतः त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा मुच्यते सर्वसंकटात्। एतत् कवचस्य पठनं धनपुत्र विवर्धनं भीतिर्विनाशनं चैव त्रिषु लोकेषु कीर्तितं। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना कुमकुमेन तु धारणाद् गलदेशे च सर्वसिद्धिर्भविष्यति। अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी लभते धनं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादतः। गर्भिणी लभते पुत्र वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारयेद्यपि कंठे च अथवा वामबाहुके। यः पठेन्नियतं भक्त्या स एव विष्णुवद् भवेत्। मृत्युव्याधिभयं तस्य नास्ति किंचिन महीतले। पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयाच्छावयेद्यदि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमां गतिं। संकटे विपदे घोरे तथा च गहने वने राजद्वारे च नौकायां तथा च रणमध्यतः पठनाद्धारणादस्य जयमाप्नोति निश्चितम्। अपुत्रा च तथा वन्ध्या त्रिपक्षं शृणुयाद्यदि सुपुत्रं लभते सा तु
दीर्घयुष्कं यशस्विनं शृणुयाद्यः शुद्धबुद्ध्या द्वौ मासौ विप्रवक्त्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वबन्धाद् विमुच्यते मृतवत्सा जीववत्सा त्रिमासं श्रवणं यदि रोगी रोगाद् विमुच्येत पठनान् मासमध्यतः लिखित्वा भोज्यपत्रे च अथवा ताडपत्रके स्थापयेन्नियतं गेहे नाग्निचौरभयं क्वचित् शृणुयाद्धारयेद्वापि पठेद्वा पाठयेदपि यः पुमान् सततं तस्मिन् प्रसन्नः सर्वदेवताः बहुना किमिहोक्तेन सर्वजीवेश्वरेश्वरी आद्याशक्तिर्महालक्ष्मीर्भक्तानुग्रहकारिणी धारके पाठके चैव निश्चला निवसे ध्रुवम्